mineralocorticoids do? So mineralocorticoids are responsible to maintain the regulation of sodium and potassium ion balance. ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन बैलेंस मेंटेन करने के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं. So that is how the terms are given, the glucocorticoids and the mineralocorticoids. Okay, so I hope you guys must have understood this much from the videos also. It is just a quick revision for you guys. Okay, so when we are talking about these glucocorticoids, mineralocorticoids, so these are basically what? Steroid products. Okay, these are steroid as in the cholesterol based compounds. ठीक है, so the starting material for these steroid hormones is cholesterol. Cholesterol is what makes the basic molecule, or we can say the basic nucleus of these compounds. इसकी प्रोसेसिंग से फर्दर फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, बट द बेसिस इज कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, so what they say is the starting material for steroid hormone biosynthesis is cholesterol, most of which arrives at the adrenal cortex in the form of low density lipoproteins, which are avidly taken up from the blood by a process of receptor mediated endocytosis. ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की हेल्प से कोलेस्ट्रॉल को अपटेक कर लिया जाता है हमारे फूड से, एंड देन इट इज फर्दर यूज्ड इन द लिवर एंड अदर पार्ट्स लाइक इन द एड्रिनल ग्लैंड टू मेक these mineralocorticoids and glucocorticoids. ठीक है, so बनते कैसे हैं? If you guys can see the slide clearly, I hope you are able to see this. It is visible to you guys. So cholesterol side chain cleavage enzyme is commonly referred to as what? P450-SCC, where SCC is an acronym for side chain cleavage. इस side chain की cleavage से ही क्या होता है? Different type of hormones जो हैं वो बनते हैं depending upon कि what type of group is attached to this cholesterol nucleus. ठीक है, so P450-SCC is a mitochondrial enzyme that catalyzes conversion of cholesterol to प्रेगनिनोलॉन. ठीक है, प्रेगनिनोलॉन. तो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोसेसिंग होती है उससे बनता है प्रेगनिनोलॉन, और जो प्रेगनिनोलॉन होता है दैट इज देन फर्दर यूज्ड टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म दीज एल्डोस्टेरॉन्स, cortisols, testosterone and estradiol. So testosterone and estradiol are what? These are the androgens, or we can say the sex hormones that are being formed in the adrenal fasciculate. ठीक है, the innermost layer that I told you about, यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी this adrenal reticularis. Sorry, my mistake. It is adrenal reticularis. ठीक है, so yes, pregnenolone जो है that is further processed to form what? Aldosterone and cortisols, testosterone and estrogen, or we can say estradiol also. ठीक है, so steroid hormones are derived from cholesterol. Steroidogenesis begins with the formation of pregnenolone. As I told you, it is formed by the processing of cholesterol, which further forms the basis of secretion of all of these mineralocorticoids, glucocorticoids, androgens and all. ठीक है, so the different steroid secreting cells possesses different enzymes that modify this pregnenolone to produce specific steroid hormones. ठीक है, so as I told you earlier, इसकी जो enzyme which is responsible is P450-SCC. SCC stands for side chain cleavage, and this enzyme is present where? It is a mitochondrial enzyme. It is present in the mitochondria. ठीक है, so corticosteroids, mineralocorticoids, glucocorticoids and androgen. Two major type of adrenocortical hormones, the mineralocorticoids and the glucocorticoids, are secreted by what? Adrenal cortex. In addition to these, small amounts of sex hormones are also secreted, especially androgenic hormones, which exhibit about the same effect in the body as the male sex hormone testosterone. ठीक है, so they are normally of only slight importance, although in certain abnormalities. अब क्या होगा कि है तो ये सेक्स हार्मोन्स ही, तो अगर इनका इम्बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम इफेक्ट ऑन द पर्सन. सो क्या होगा कि
In certain abnormalities of the adrenal cortices, extreme quantities can be secreted and can result in masculinizing effects. क्योंकि क्या है ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर इनका अमाउंट एक्सेस हो जाएगा तो फिर मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट जो है पर्सन पे दिखने लग जाएगा ऑल द बॉडीज ऑफ अ फीमेल, so it can cause a huge problem. Okay, so mineralocorticoids they have gained this name because they specially affect the electrolytes, the minerals of extracellular fluid, that is sodium and potassium in particular. उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए these mineralocorticoids are important, so that is why they are called as the mineralocorticoids. And the example is aldosterone, which is secreted by zona glomerulosa. ठीक है, उसके बाद है the glucocorticoids. They have gained their name because they exhibit important effects that increases blood glucose concentration. और ये कहाँ affect करता है, liver पे. ठीक है, so they have an additional effect on both proteins and fat metabolism. ग्लूकोज रिलीज का काम तो ये करते ही करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे तो ये इंक्रीज करना ही करता है, उसके अलावा इसका इफेक्ट किस पे देखने को मिलता है, प्रोटीन पे भी, फैट मेटाबॉलिज्म पे भी. हम फर्दर देखेंगे लेक्चर में that what are these effects and how it does that, but it has some additional effects on the protein metabolism and fat metabolism also. ठीक है, so yes, these are some important hormones that we will be discussing in context of adrenal gland. अभी ये है कि दिस टेबल शोज कि जो हार्मोन है उसको जो असाइंड वर्क है उसके अलावा भी इनकी कोई एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है, जैसे कि कॉर्टिसोल. अब है तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, पर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी दिखाता है. ठीक है, सो वन इज जस्ट अ बेस नंबर दे हैव टेकन, दिस इज एन आर्बिट्रेरी नंबर दे हैव टेकन जस्ट टू शो द intensity of the effect. ठीक है, तो cortisol has both the glucocorticoid activity and the mineralocorticoid activity both. ठीक है, उसके बाद है this first another thing is deoxycorticosterone. This deoxycorticosterone, if you see, the glucocorticoid activity is 0.2 but the mineralocorticoid activity is 100. And in aldosterone the glucocorticoid activity is very low but the mineralocorticoid activity is very high, 3000 is the number they have given it. That means कि ये mineralocorticoid है तो particularly mineralocorticoid activity की तरफ ही ज्यादा है, glucocorticoid activity दिखाता है but बहुत कम, जबकि cortisol although it is a glucocorticoid but it has similar glucocorticoid and mineralocorticoid activity. ठीक है, so this is something you must remember. This can be a very good question if you or any one of you is preparing for the competition exams. Okay, so next is the adrenal steroid hormones in blood. How these hormones are in stays in blood and what they do there and how they are secreted and all, that is what we are going to study now. So adrenal cortical hormones are transported in blood bound to specific plasma protein, corticosteroid binding globulin, which is also called as what? Transcortin or by albumins. So there are two things to which these hormones can bind. अदरवाइज अगर ये फ्री फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, या तो बहुत जल्दी से डिग्रेड हो जाएंगे, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक के लेक्चर में देखा था कि जो बाउंड हार्मोन्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ इज मच हायर देन दोज व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन अ बाउंड फॉर्म इन द ब्लड. ओके, सो जो एड्रेनल स्टेरॉइड हार्मोन्स है ये किससे बाइंड करते हैं? देयर आर टू थिंग्स टू व्हिच दीज प्रोटीन्स दीज हार्मोन्स कैन बाइंड. दीज आर ट्रांसकॉर्टिन एंड एल्बुमिन. ट्रांसकॉर्टिन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन. Another name is transcortin and the another protein to which these can bind is albumins. ठीक है, तो CBG बनता है. CBG is synthesized and secreted by liver. CBG is a glycoprotein with a molecular weight of about 58,000. ठीक है, it is 58,000 and is a member of serine proteinase inhibitor, SERPIN, super
is a member of serpin superfamily of proteins. It has a single steroid hormone binding site whose affinity for glucocorticoids is nearly 20 times higher than for aldosterone. That means it will bind cortisol more readily than aldosterone. ठीक है, this is we are talking about transcortin or CBG, the corticosteroid binding globulin. ठीक है, तभी इसका नाम है corticosteroid because it binds cortisol much more readily than aldosterone. ठीक है, so about 95% of glucocorticoids and about 60% of aldosterone in blood are bound to protein. Under normal circumstances, the concentration of free or unbound cortisol in plasma is about 100 times than that of the aldosterone. ठीक है, कि कोई अगर ऐसी कंडीशन है कि जब कॉर्टिसोल की जो नीड है वो ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो अनबाउंड कॉर्टिसोल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स ज्यादा हो किससे, एल्डोस्टेरॉन से. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? शायद किसी ने हैंड रेज किया. ठीक है जी, ठीक है. सो हम कहा थे, हाँ, probably because the circulate bound to plasma proteins, adrenal steroids have a relatively, as I told you earlier also, कि अगर बाउंड फॉर्म में हार्मोन है तो उसकी हाफ लाइफ विल बी मच हायर देन दोज विच आर प्रेजेंट इन अनबाउंड और फ्री फॉर्म. तो क्या होगा कि adrenal steroids have a relatively long half life in blood, that is around 1.5 to 2 hours for cortisol and about 15 minutes for aldosterone. cortisol का बहुत देर तक भी हमारे ब्लड में फ्री फॉर्म में रहना is not good. हम देखेंगे in the lecture further, but I should know this. ठीक है, so metabolism and excretion of adrenal cortical hormones, because mammals cannot degrade the steroid nucleus, elimination of steroid hormones is achieved by inactivation through metabolic changes that made them unrecognizable to their receptors. ठीक है, अब हम इनको डिग्रेड तो नहीं कर सकते, but there must be some way कि जिससे इनको अनरिकग्नाइजेबल बना दिया जाए इनके रिसेप्टर्स के लिए, ताकि जो इनका इफेक्ट है वो थ्रू आउट ना रहे, इनका इफेक्ट तब तक रहे जब तक बॉडी को रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स नाउ ड्यू टू द हार्मोन्स, क्योंकि अब इनको डिग्रेड तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस ऐसे कर देते हैं इनके ऊपर कि इनका रिसेप्टर इनको पहचान ही ना सके. ठीक है, so inactivation of glucocorticoids occur mainly in liver and is achieved primarily by reduction of arin and its keto group at position 3. ठीक है, so position 3 is this is position 3, और इसके कीटो ग्रुप को ये लोग क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. दिस इज रिंग ए. हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? विष्णु, आपको कुछ पूछना है? नहीं मैम, कुछ नहीं पूछना. तो आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर देंगे. थैंक यू. ठीक है जी, तो हम लोग कहाँ थे? यस, मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स. जैसे मैंने आपको बताया वी कैन नॉट डिग्रेड देम इन आवर बॉडी, तो उस केस में टू आई वुड से टू एंड अप देयर इफेक्ट फॉर दैट टाइम पीरियड, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन पे सब मेटाबॉलिक चेंजेस आर मेड, जिसकी वजह से दे बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल टू द रिसेप्टर्स और द इफेक्ट कैन बी डिमिनिश्ड फर्दर. ठीक है, conjugation of the resulting hydroxyl group on carbon 3 with glucuronic acid or sulfate increases water solubility and decreases binding to CBG, that is transcortin, which is a corticosteroid binding. What was that? Corticosteroid binding steroids binding globulins. ठीक है, so the steroid can now pass through renal glomerular capillaries and be excreted in the urine. अब देख रहे हैं कि बॉडी में हर एक चीज को बैलेंस करने का एक मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है. अब यहाँ अगर हमारी बॉडी में देयर आर नो मैकेनिज्म्स टू डिग्रेड इट, देन द बॉडी हैज मेड अ मैकेनिज्म टू एक्सक्रीट इट आउट फ्रॉम द सिस्टम व्हेन द वर्क इज डन. ठीक है, सो उस केस में क्या करेंगे,
जैसे ही थर्ड पोजीशन का ये कीटो ग्रुप हटा के वहां पे एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से ये क्या बन जाता है, ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि सॉरी कॉन्जुगेशन हो जाती है इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस विल बी सॉल्युबल टू वाटर, और सोल्यूबल होने की वजह से इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी with the help of the glomerular filtrations. ठीक है, because recognizable hormonal products can be identified in the urine, it is possible to estimate the daily secretory rate of steroid hormones by the non-invasive techniques of analyzing urinary excreta. So basically the amount of this hormone in the body is actually used to measure the secretory rate of steroid hormones sometimes, depending upon the requirement again. So yes, the physiology of mineralocorticoids. क्या होता है? Although several naturally occurring adrenal cortical hormones, including glucocorticoids, can produce mineralocorticoid effect, जैसा कि हम लोगों ने देखा cortisol के केस में. Aldosterone is by far the most important mineralocorticoid. ठीक है, cortisol कर सकता है perform mineralocorticoid activity भी, लेकिन होता क्या है कि mineralocorticoid activity although aldosterone करता है, लेकिन cortisol can also perform this mineralocorticoid activity, जैसा कि हम लोगों ने इस टेबल में देखा था, if you guys remember. ठीक है, तो हमने यहाँ देखा था ना कि cortisol has both glucocorticoid and mineralocorticoid activity, but the aldosterone has more of a mineralocorticoid activity than glucocorticoid activity. ठीक है, so yes, this is something you guys must remember. So aldosterone is the most important. एक मिनट, ठीक है. So this is what I wanted to convey to you guys. So let's see what they have told us further. So aldosterone is by far, as I told you, the most important mineralocorticoid physiologically. In its absence, there is a progressive loss of sodium by the kidney. क्योंकि aldosterone has a mineralocorticoid function. Mineralocorticoids, as I told you earlier in the presentation, कि mineralocorticoids क्या होते हैं? Mineralocorticoids are those steroid hormones which are actually responsible to balance the sodium and potassium ions in the body. ठीक है, so इनकी absence में क्या होगा? There is a progressive loss of sodium by the kidney which results secondarily in a loss of extracellular fluid. कैसे होगा अभी हम देखेंगे further in the presentation again. Sodium in the blood plasma may gradually fall. जिस situation को हम क्या कहते हैं? Hyponatremia. ठीक है, and natremia means this fall of sodium ion concentration in the body fluid. So this situation is called as the hyponatremia. So from normal value क्या है सोडियम की in the extracellular fluid, it is 140 मिली इक्विमोलर पर लीटर्स. ठीक है, जबकि रिड्यूस होगी कितनी जाएगी? 120, और इवन लोअर इन एक्सट्रीम केसेस व्हिच कैन लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, so with the decrease in concentration of sodium and the principal that is the principal cation of extracellular fluid, there is a net transfer of water from extracellular to intracellular spaces aggravates hypovolemia. Hypovolemia मतलब increase in the volume of this intracellular blood level कह लो आप, intracellular fluid कह दो. ठीक है, तो इसकी वजह से देखिए अभी आप चेंजेस कैसे हो रहे हैं कि एकदम से स्वेलिंग काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है. ठीक है, so in the absence of aldosterone, the ability to excrete potassium is impaired, and with continued dietary intake, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम में इंक्रीज. अब क्या हो रहा है? सोडियम को वो रिटेन नहीं कर पा रहा है और पोटेशियम को वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है. The two things are working together when there is an absence of aldosterone. First is sodium in its absence, the progressive loss of sodium by the kidney, and also the ability to excrete potassium is impaired. तो सोडियम को रिटेन नहीं कर पा रहा, पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा. So plasma concentration of potassium may increase from normal value of 4 to 8 to 10, almost double से भी ज्यादा.
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं हाइपरकैलेमिया. सो हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, these are both antagonistic and these are both occurring at the expense of what, at the absence of aldosterone in the body. ठीक है, so the increased concentration of potassium in the blood and therefore in extracellular fluid results in partial depolarization of the plasma membranes of all cells. ठीक है, लीडिंग टू कार्डियक एरिथमिया, वीकनेस ऑफ मसल्स इंक्लूडिंग द हार्ट. उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे हार्ट विल स्लो डाउन होगा. हार्ट अगर ब्लड ही पंप नहीं करेगा तो फिर सारी फंक्शनिंग रुक जाएगी बॉडी की, एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू डायर कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, so let's see how this works on the principal cells of the kidney. So the principal cells in the connecting segments and the cortical collecting ducts are the most important targets for aldosterone. If you guys remember when we read about kidney and the whole of this loop of Henle, the nephrons and all, तो वहां पे हम लोगों ने प्रिंसिपल सेल्स का भी जिक्र किया था. ठीक है, सो एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस द सोडियम परमेबिलिटी ऑफ ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. उसकी वजह से क्या होगा, वो सोडियम का अपटेक कर पाएगी. ठीक है, एल्डोस्टेरोन अगर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा तो वो सोडियम का अपटेक कर पाएगी. और हमें ये पता है कि बेसल साइड ऑफ सेल्स ऑलवेज हैव व्हाट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. तो जैसे ही सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल विल इंक्रीज, दिस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप विल कम इनटू एक्शन. और ये क्या करेगा, it will pump the sodium from inside to the blood that is flowing sideways of these nephronal tubules. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम का मैक्सिमम ऑफ पार्ट जितना ही रिटेन कर सकते हैं, they will retain. ठीक है, so aldosterone induces transcription of sodium channel genes and may increase expression of proteins that transform non-conductive sodium channels to a functionally active state and perhaps insert sequestered channels into the luminal membrane. ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करतेगा कि जो सोडियम चैनल्स बनाने के जीन्स है उनका भी एनहांसमेंट करा देगा एंड विल मेक देम गेट लोकेटेड ऑन द luminal side of this principal cell so that more and more of sodium can be taken up. ठीक है, it also increases the expression of sodium potassium ATPase जो कि बेसल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जितना भी सोडियम का अपटेक हो रहा है दैट सोडियम कैन बी ट्रांसफर टू ब्लड अगेन. ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसको भेजा जा सके. ठीक है, बाय इंड्यूसिंग इट्स सिंथेसिस एंड मेम्ब्रेन इंसर्शन. Yeah, at the same time, aldosterone increases the capacity of ATP generation by promoting synthesis of some enzyme of citric acid cycle in mitochondria. तो आप देख रहे कितने functions जो है वो simultaneously चल रहे हैं. Someone wanted to join the meeting? I guess so. No, there is no one. ठीक है, so this is how this aldosterone is working and that is why it is very important. अच्छा, late distal tubule में ये क्या करता है, principal cells in late distal tubule reabsorb sodium and secrete potassium, जो कि अभी हम डिस्कस करते आ रहे थे कि sodium reabsorption and potassium secretion by the principal cells depend upon the activity of a sodium potassium ATPase pump in each cell's basolateral membrane. This is the basolateral side and it is what? It is having this sodium potassium ATPase pump. इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कितना अपटेक ऑफ सोडियम यहाँ से हो पाएगा. दिस पंप मेंटेन्स अ लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल. और ये सब क्या है, ये चैनल्स है. तो चैनल्स में क्या होगा, थिंग्स विल फ्लो फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर दिस पंप विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली तो अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी रहेगी, तो चैनल के थ्रू सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन में भी वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट निल. So this working of this pump is what actually maintains this uptake of sodium from this luminal site. ठीक है? So this pump maintains a low sodium concentration inside the cell and therefore favors sodium diffusion into the cell through special channels, as I told you. The secretion of potassium by these cells from the blood into the tubular lumen involves two steps. अच्छा, पोटेशियम का अपना पोटेशियम चैनल्स भी है जो क्या करेंगे, पोटेशियम को सिक्रीट करेंगे इन द ल्यूमिनल फ्लूइड. ठीक है, सेल से पोटेशियम को सिक्रीट करेंगे इन द ल्यूमिनल फ्लूइड. तो उसके केस में क्या हुआ, स्टेप्स उसके लिए क्या क्या है, पोटेशियम एंटर्स द सेल बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. दिस
which maintains a high intercellular potassium concentration, and then once in the cell, potassium diffuses down its concentration gradient across the luminal membrane into the tubular fluid. So aldosterone acts on principal cells and promotes what? Sodium reabsorption. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा रहा है. This is what they wanted to tell. अच्छा, अब these channels, this epithelial sodium channels. So aldosterone increases, as I told you, sodium potassium pump, facilitates the insertion of epithelial sodium channel proteins into the luminal membrane, and the epithelial sodium channels is a membrane bound ion channel that is permeable to what? Sodium ions. So this is what actually what we have been discussing so far. That is what they are saying. ठीक है, ये इन्होंने सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर बेसिकली डिफाइन किया. इट इज अ 6 पास प्रोटीन, मतलब 6 टाइम्स से मेम्ब्रेन को पास कर रहा है. ठीक है. So it plays a major role in the sodium and potassium ion hemostasis of the blood, epithelia and extraepithelial fluids by reabsorption of sodium ions. So the activity of epithelium sodium channel in colon and kidney is modulated by this mineral corticoid aldosterone. It can be blocked by either triametrine or amiloride, which are used medically to serve as diuretics. In kidney, it is inhibited by the atrial natriuretic peptide, causing natriuresis and diuresis. So this is basically a condition when we medically want to promote the diuresis. ठीक है. सेल्युलर मैकेनिज्म क्या एल्डोस्टेरॉन के एक्शन का, तो एल्डोस्टेरॉन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन. ठीक है, इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन. So activation of mineralocorticoid receptor by aldosterone results in its dissociation from molecular chaperones. Molecular chaperones जो हैं वो basically जो हैं they are actually holding this mineralocorticoid receptor of aldosterone. So इसका जब activation होता है by aldosterone, which leads to what? It leads to this dissociation from molecular chaperones, translocation into the nucleus, and binding to the hormone response element in the regulatory region of these target gene promoters to enhance expression. So basically, it is a steroid hormone. It can enter inside the cell very easily. So that is what it does. ठीक है. So उस केस में क्या करेगा? It will bind to its receptor, जिसकी वजह से chaperone will leave the receptor. Now it can enter inside the nucleus and can start, the expression of the gene to which it is going to bind. ठीक है. So stimulatory action of aldosterone and sodium reabsorption in renal tubular cell depends mostly on the transcriptional regulation जो ये करता है. ठीक है. So aldosterone enhances the gene expression of profibrotic molecules. Profibrotic molecules including collagen transforming growth factor beta and plasminogen activator inhibitor type 1. ठीक है. So there are many functions जो ये aldosterone करता है. Basically it enters inside the cell और उसके बाद it causes the effect. अच्छा, सेलुलर मैकेनिज्म को अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें तो बिकॉज जैसे मैंने आप लोग को बोला इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, सो ऑब्वियसली इट इज लिपिड सॉल्युबल, दैट इज व्हाई इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन वेरी इजीली. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी इन सेलुलर मेम्ब्रेन्स, aldosterone diffuses readily to the interior of the tubular epithelial cells. In the cytoplasm of tubular cells, aldosterone combines with a highly specific cytoplasmic receptor जिसका नाम है MR, mineralocorticoid receptor, a protein that has a stereomolecular configuration that allows only aldosterone or very similar compounds to combine with it. So the receptor is very particular about aldosterone. ठीक है. The aldosterone receptor complex diffuses into the nucleus where it may undergo further alterations, finally inducing one or more specific portions of the DNA to form one or more types of messenger RNA related to the process of sodium and potassium transport. So basically क्या कराएगा? Gene expression कराएगा. ठीक है. उसके बाद क्या करेगा? The messenger RNA diffuses back into the cytoplasm जहाँ पे प्रोटीन बनेगा और सोडियम पोटेशियम ATPase जो है उसका भी है, मतलब कि सोडियम पोटेशियम पंप का सिक्रीशन जो है ये चालू करा देगा.
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एडिशनल क्या करेगा, एडिशनल प्रोटीन्स परहैप्स इक्वली इंपॉर्टेंट आर एपिथेलियम सोडियम चैनल्स, द ENAC, ठीक है। These proteins inserted into the luminal membrane of the same tubular cells that allows rapid diffusion of sodium ions from tubular lumen into the cell and then the sodium, ठीक है। तो बेसिकली वही जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल सेल्स में कि सोडियम की अपटेक को इंक्रीज करा देगा बाय मेकिंग दिस एपिथेलियल सोडियम चैनल्स एंड गेटिंग देम इंसर्टेड इन द luminal साइड ऑफ दिस प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है। सो aldosterone does not have an immediate effect on sodium transport, rather this effect must await for about 30 minutes is required before new RNA appears in the cells and about 45 minutes is required before the rate of sodium transport begins to increase. So इसका इफेक्ट आने में 30 to 45 minutes लग जाते हैं, ठीक है। And the effect reaches maximum only after several hours. ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एक्शन ये बता रहे हैं कि जाके कैसे ये बाइंड कर जाएगा एंड बाइंड करने के बाद it will lead to what, the increase in the gene expression, ठीक है। Aldosterone stimulates sodium and potassium transport in sweat glands also, in salivary glands also, and in intestinal epithelial cells also. कैसे? Aldosterone greatly increases the reabsorption of sodium chloride and secretion of potassium by the ducts, ठीक है। And the effect on the sweat glands is important to conserve body salt in hot environments like in summers, and the effect on salivary glands is necessary to conserve salt when excessive quantities of saliva are lost. So basically it is a protecting mechanism or also a conservation mechanism. Aldosterone also greatly enhances sodium absorption by intestine, especially in the colon, which prevents loss of sodium in the stool. Conversely, in the absence of aldosterone, sodium absorption can be poor, leading to failure to absorb chloride and other anions and as well as water. And the unabsorbed sodium chloride and water can lead to diarrhea with further loss of salt from the body. वाटर का लॉस कैसे होगा, अगर अंदर की जो कंडीशन है वो हाइपोटोनिक होगी तो ऑब्वियसली वाटर जो है दैट विल मूव फ्रॉम एन हाइपोटोनिक सिचुएशन टू हाइपोटोनिक सिचुएशन। अब एक्सक्रीशन भी सोडियम का ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो यूरिन पास कर रहा है वो हाइपरटोनिक है, तो सारा वाटर जो है दैट विल मूव फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू दिस ट्यूबुलर सिक्रीशन, और इसकी वजह से क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेटिक कंडीशन होती है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन ऑब्वियसली हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल्स है दे आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स विद सिक्रीट रेनिन, Ras system will come into action, macula densa will come into action, ACE will come into action, and finally what, the aldosterone will be secreted, ठीक है। ग्लोमेरुलोसा में कैसे सिक्रीशन जो है इसका रेगुलेट होता है, सॉरी, so stimulation of aldosterone synthesis by angiotensin 2, this accelerates the conversion of cholesterol to pregnenolone and 11-deoxycorticosterone to aldosterone, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज जस्ट द मैकेनिज्म कि कैसे स्टिमुलेशन जो है रास सिस्टम की विल लीड टू द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड दिस एल्डोस्टेरॉन विल बी देन रिलीज्ड इन द ब्लड, जहां पे इसका फिर अपना फंक्शन शुरू कर देता है, ठीक है। देयर इज स्टार प्रोटीन इज स्टेरॉइड acute regulatory protein. This high concentration of potassium in blood also increases aldosterone synthesis and secretion by increasing intracellular calcium secondary to partial membrane depolarization, ठीक है। फिर इसमें high concentration of potassium ion in blood is also a regulating factor for the secretion of aldosterone, and this star protein permits the cleavage of cholesterol into pregnenolone by mediating the transport of cholesterol from the outer mitochondrial membrane to inner mitochondrial membrane, क्योंकि जो P450 SCC है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, तो इस कोलेस्ट्रॉल को इनर मेम्ब्रेन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस स्टार प्रोटीन इज एक्चुअली व्हाट हेल्प्स, ठीक है।
ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कैसे पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन विल हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन. नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और हम लोगों ने जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पढ़ा है दैट इज कॉर्टिसोल. Although named for their critical role in maintaining carbohydrate reserves, glucocorticoids produce, एक मिनट, स्लाइड चेंज नहीं हो रही थी देर से, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं. So, although named for their critical role in maintaining carbohydrates reserve, glucocorticoids produce diverse physiological actions, many of which are still not well understood and therefore can be considered only phenomenologically. ठीक है? Virtually every tissue of the body is affected by an excess or deficiency of glucocorticoids. If a simple phrase could be used to describe the role of glucocorticoids, it would be coping with adversity. Yeah, so glucocorticoids, again as I told you, it has both the glucocorticoid activity and the mineralocorticoid activity. It has many functions. We'll see further in the lecture. So this is the diagrammatic outline of the synthesis of cortisol from cholesterol in the adrenal cortex. ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टार, मैंने आपको बताया स्टार प्रोटीन इज द वन विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ cholesterol from the outer mitochondrial membrane to the inner mitochondrial membrane. And obviously वहाँ पे फिर P450 SCC will come into action and will further modify this cholesterol into pregnenolone, and this pregnenolone is further then used to make what? This cortisol. ठीक है, and these are the enzymes, these are the hormones which are secreted from different layers that we have discussed earlier, and this glucocorticoid, I will say cortisol, is secreted by zona fasciculata, the middle adrenal cortex layer. ठीक, अच्छा इसके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? अगेन इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, तो ये भी मेम्ब्रेन जो है पास कर सकता है. सो these will again pass the membrane, will bind to its receptor in the cytoplasm, जहाँ पे बाइंड होने के बाद receptors will dimerize and will then reach the nucleus where it will bind to the particular gene and will lead to what? The function they are supposed to perform. ठीक है, so the effects of cortisol on carbohydrate metabolism क्या है? It stimulates the gluconeogenesis, the formation of glucose from glycerol and proteins rather than carbohydrates. By far the best known metabolic effect of cortisol and other glucocorticoids on metabolism is their ability to stimulate gluconeogenesis by the liver. As I told you कि इनका इफेक्ट जो है लिवर पे आता है, often increasing the rate of gluconeogenesis as much as to 6 to 10 folds. कितना ज्यादा इफेक्ट है. So this results mainly from two effects of cortisol. Cortisol increases the enzyme required to convert amino acids into glucose in the liver cells. तो मैंने आपको बताया था कि cortisol is also involved in the fat and protein metabolism, जहाँ पे ये प्रोटीन और फैट को तोड़ के ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाने का काम करता है. ठीक है, so cortisol causes mobilization of amino acids from extrahepatic tissue, mainly from muscles. ठीक है, क्या कराएगा? मोबिलाइजेशन कराएगा अमाइनो एसिड्स मेनली फ्रॉम मसल टू लिवर, जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सके. So one of the effects of the increased gluconeogenesis is a marked increase in glycogen storage in the liver cells. This effect of cortisol allows other glycolytic hormones such as epinephrine and glucagon to mobilize glucose in times of need such as between meals. ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट है? रिडक्शन ऑफ प्रोटीन स्टोर्स इन एसेंशियली ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द लिवर. तो सिर्फ लिवर के जो प्रोटीन स्टोर्स हैं उसको ये कोई इफेक्ट नहीं करता, बाकी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं उनके ये प्रोटीन स्टोर्स को इफेक्ट करता है, मेनली मसल्स के प्रोटीन स्टोर को जो ये इफेक्ट करता है. So the present of great excess of cortisol, the muscles can become so weak that the person cannot even rise from the squatting position. Can you see कितना harsh effect आता है cortisol का? It increases the liver and plasma protein. Coincidentally, with the reduction of proteins elsewhere in the body, the liver proteins become enhanced. So the plasma proteins which are produced by the liver and then released into the blood are also increased.
लिवर के प्रोटीन बढ़ाएगा तो जो प्लाज्मा के लिए प्रोटीन लिवर से बन रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो प्लाज्मा और लिवर में प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है, बाकी सब जगह प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, स्लाइड चेंज हो रही थी, नहीं हो रही थी। Increased blood amino acids diminish transport of amino acids into the extrahepatic cells and enhance transport into hepatic cells. So cortisol क्या करेगा? Cortisol depresses amino acid transports into the muscle cells and perhaps into the other extrahepatic cells जो हम लोगों ने डिस्कस किया. This decreases the intracellular amino acid concentrations and consequently decreases the synthesis of protein. Yet catabolism of proteins in the cell continue to release amino acids from already existing proteins and these diffuse out of the cells to increase the plasma amino acid concentration and liver amino acid concentration, we can say liver protein concentration. ठीक है, so therefore cortisol mobilizes amino acids from non-hepatic tissues and in doing so diminishes the tissue stores of the protein. ठीक है, so basically this is what we have discussed so far. Effect of cortisol on fat metabolism. Fat पे क्या effect आता है? So cortisol promotes mobilization of fatty acids and glycerol from adipose tissue. ठीक है, this increases the concentration of free fatty acids in the plasma, which also increases their utilization for energy. And cortisol also seems to have a direct effect to enhance the oxidation of fatty acids in the cells. फैटी एसिड्स का ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, अदरवाइज ये प्लाज्मा में जो फैटी एसिड्स है, फ्री फैटी एसिड, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, विच कैन बी फर्दर यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. डेवलपमेंट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या रोल है? So glucocorticoids have multiple effect on fetal development. An important example is their role in promoting maturation of lung and production of the surfactants which are necessary for extrauterine lung function. अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने सर्फेक्टेंट के बारे में जिक्र किया था when we were studying the structure of alveoli. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे और जब हम एल्विलाई के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक सर्फेक्टेंट का भी जिक्र किया था. तो दिस इज द सेम सर्फेक्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. During development in humans by 25 to 28 weeks, the amount of surfactant is enough to prevent alveolar collapse when breathing begins. ठीक है, mice with homozygous disruptions in the corticotrophin releasing hormone, that is CRH gene, die at birth due to pulmonary immaturity. अब अगर उसके पास सर्फेक्टेंट नहीं होंगे तो जो फर्स्ट ब्रीथ लेगा तभी जो है उसकी एल्वेओलाइज कोलैप्स कर जाएंगी. तो कोलैप्स करने की वजह से क्या होगा? इट वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है, so in addition glucocorticoids are necessary for normal brain development also by initiating terminal maturation, remodeling axons and dendrites and affecting cell survival and may also play a role in hippocampal development. So, बहुत सारे इफेक्ट है कॉर्टिसोल के. ठीक है, this is what they have written कि some of the different types of stress that increases cortisol release are following. ट्रॉमा कैन बी रीजन की कॉर्टिसोल का अमाउंट जो है हमारे ब्लड में एकदम से इंक्रीज कर जाए, इन्फेक्शन की वजह से, इंटेंस हीट और कोल्ड की वजह से. अगर हमने नॉरएपिनेफ्रिन और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो मिमिक कर दें, इस तरह के अगर ड्रग्स दी तो भी कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा. सर्जरी की वजह से कर जाएगा. Restraining in animals so that it cannot move can also cause stress and can lead to the increase in the cortisol concentration in the blood and obviously many effects. ठीक है, they have to check the level of this cortisol in the blood. क्या किया? कुछ experiments किए गए जिसमें देखा कि after 6 minutes there was a shoot up increase in the cortisol levels in the blood. So obviously it is because of the stress they have given to this rat. अच्छा, स्ट्रेस में इसका फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स इंक्लूड्स short-term responses include increased heart rate, increased blood pressure, liver converts glycogen to glucose and releases glucose to blood, जिससे कि बहुत ज्यादा जो एनर्जी डिमांड है अंडर स्ट्रेस वो भी मीट की जा सके. डायलेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स,
changes in the blood flow patterns leading to decreased digestive system activity and reduced urine output. ठीक है, and it also increases what metabolic rates. ठीक है, metabolic rate भी जो है ये increase कर देता है. prolonged stress के केस में क्या करेगा, retention of sodium and water by the kidneys, increased blood volumes and blood pressure. This is the mineralocorticoid function it is performing. सोडियम और वाटर के रिटेंशन में हेल्प करेगा और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ये क्या दिखाएगा, इट द प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज और ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी, increased blood glucose and suppression of immune system. It is one of the more prolonged stress effect of this cortisol. ठीक है, so cortisol suppresses the immune system. हम लोग देख लिया. Even though we knew that cortisol secretion often increases greatly in stressful situation, you're not sure why this is of significant benefit to animals. One possibility is that glucocorticoids causes rapid mobilization of amino acids and fats from their cellular stores, making them immediately available both for energy and for synthesis of other compounds. Still, there are many functions of cortisol which are unknown. The main stages, okay, the inflammation में अब इसका कैसे रोल है, there are 5 main stages of inflammation. That is the release from the damaged tissue cells of chemical substances that activate the inflammation process. Chemicals such as histamine, bradykinin, proteolytic enzyme, prostaglandins and leukotrienes. ठीक है, एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन द इन्फ्लेम्ड एरिया. आप लोगों ने कभी देखा होगा कोई इन्फ्लेम्ड एरिया है, कुछ है, वहां पे बम्प जैसा बन जाता है, रेडिश बम्प. दिस इज बिकॉज द इंक्रीज ब्लड फ्लो इन दैट इन्फ्लेमेटेड एरिया. ठीक है, जिसको हम इराइडेमा सिचुएशन कहते हैं. लीकेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑलमोस्ट प्योर प्लाज्मा आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द damaged areas because of increased capillary permeability followed by clotting of the tissue fluids, thus causing a known pitting type of edema. ठीक है, infiltration of area by leukocytes obviously to check if there is some allergen or something. तो leukocytes सबसे पहले आएंगे and in those leukocytes neutrophil is the one which reaches fastest there. ठीक है, and large amount of cortisol are secreted or injected into the person. The cortisol has two basic anti-inflammatory, मतलब these are the steps which are for the inflammation. ये inflammation होती है तो नॉर्मल सिचुएशन में ये स्टेप्स होते हैं, लेकिन cortisol मैंने आपको बताया इट इनहिबिट्स द इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये इसके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं. वो क्या होते हैं, सॉरी, it can block the early stages of inflammation process before inflammation even begins. और क्या कर सकता है, if inflammation has already begun, it causes rapid resolution of the inflammation and increased rapidity of the healing. These explains are further कैसे explain किया उन्होंने. corticosteroid prevents the development of inflammation by stabilizing lysosomes and by other effects. कैसे, it stabilizes the lysosome membrane जिसकी वजह से जो effect है वो फैल नहीं पाता है. अगर lysosome burst होता है तो it has all the digesting enzymes, तो जिसकी वजह से it will affect the cells nearby. तो cortisols try to minimize the damage. ठीक है, cortisol decreases the permeability of capillaries so that not much of the plasma will be oozed out from the capillaries. Cortisol decreases both migration of the blood cells, जैसे कि हमने बोला कि ल्यूकोसाइट्स तुरंत से आ जाती है, तो cortisol उसको भी डिक्रीज करता है. Cortisol suppresses the immune system, causing lymphocyte reproduction to decrease markedly. Cortisol attenuates fever mainly because it reduces the release of interleukin-1 from WBC, which is one of the principal excitants to the hypothalamic temperature control system. So these are the effects cortisol have in case of inflammation. Immune cells पे again it is a steroid hormone, it can enter inside the cell and it can show the effects. अच्छा, जो कॉर्टिकल हार्मोन्स इनकी सिंथेसिस कैसे कंट्रोल होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ACTH. ACTH is being secreted by what? It is secreted by hypothalamus. So hypothalamus will secrete ACTH, which will then further lead to the secretion of these corticotrophin releasing hormones. Sorry, not corticotrophin releasing. This ACTH will lead to the stimulation of steroidogenesis by ACTH in zona vasculator cells, which will further lead to the
The CRH is released by hypothalamus, which will release which will reach to anterior pituitary. Anterior pituitary, upon getting this CRH, will further generate a response in the form of ACTH. This ACTH will reach to the adrenal cortex, and where it will lead to the secretion of these different hormones. Yeah. So ACTH is the one which reaches the kidney. Okay. So this was what we have studied in the last week. I hope you guys didn't face any problem. Still, if you guys have faced any problem, then we can discuss that. Otherwise, we will move towards this questions. इसमें कुछ पूछना है या हम questions करें? First, we'll discuss the assignment questions and then we'll move towards some questions that I have brought for you guys. No questions? Okay, then move towards this assignment part. So first question in the assignment was you have to name all of these layers. ये हम लोगों ने पढ़ी थी एकदम starting of the lecture में. So the thing which is marked as 1 is, बताइए सब लोग, what is this layer called which is marked as 1? Zona glomerulus. Yes, it is zona glomerulosa. ठीक है. The second one is zona fasciculator. Fasciculator, perfect. And it secretes what? Fasciculator क्या secrete करती है? It secretes cortisol. अभी हम cortisol तो discuss करते आ रहे थे. लिखा भी यहाँ पे इन्होंने cortisols and androgens. And the third one is zona reticularis. ये यहाँ पे mentioned है already. Fourth layer is, what is that? The area which is marked as fourth is? It is medulla, that adrenal medulla, perfect. Okay, question number 2. Slide has changed or not? No, ma'am. No, ma'am. Now it has changed? Okay, so what is the thing which is marked as 1? Angiotensin 1. Perfect. The thing which is marked as 2? Angiotensin 1. Perfect, perfect. और ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? RAS सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना? RAS सिस्टम ये सब हमने पढ़ा था when we were studying about nephrons and kidneys. ठीक है? Okay, the thing which is marked as 3? Renin. No, third is not renin. It is cells, the juxtaglomerular cells. ठीक है? The thing which is marked as 4th? Angiotensin 2. Yes, angiotensin 2. And the thing which is marked as 5? It is renin. It is renin. ठीक है. Okay, question number 5. Sorry, not 5, sorry. The third question of the assignment was, the thing which is marked as 1? Amino acids. Amino acids. The thing which is marked as 2? Corticosterol. Cortisol, yes. The thing which is marked as 3? Liver. Liver, perfect. And the thing which is marked as 4? Glucose. Glucose, perfect. Okay, the next question is, the thing which is marked as 1, it is the structure of principle, they are perfect, basically showing the distal convoluted tubule. So the thing which is marked as 1 is? Intercalated cells. Intercalated cells, perfect. The thing which is marked as 2? Distal and collecting tubules. Yes. Thing which is marked as 3? Cells. Principal cells. Principal cells, perfect. Okay, question number, this is the last question of the assignment. The thing which is marked as 1? Hippocampus. Hippocampus, a structure in the brain. The thing which is marked as 2? Pituitary. Pituitary, structure ही बता रहा है इसका. Thing which is marked as 3? Glucocorticoids. Corticosteroids. बिल्कुल बिल्कुल. The thing which is marked as 4th? CRF. Yes, the corticosteroid releasing factors. ठीक है?
उसके बाद है द थिंग विच इज मार्क्ड एज 5 ACTH. ACTH which is secreted by pituitary. ठीक है, the thing which is marked as 6 Adrenal cortex. adrenal cortex. Perfect. cortex. ठीक है. So you guys have solved the assignment successfully and you didn't face any problem. Very good. So now move towards the question that I have brought for you guys. Very easy questions. I don't think you guys will face any problem in answering them. Question number 1 का आंसर बताएंगे मुझे. The adrenal cortex is divided into how many zones? 4 zones. Adrenal cortex. आंसर क्या होगा इसका? ABCD में से बताइए. 3. 3 exactly. We are talking about cortex here. So cortex तो 3 ही layers है. Glomerulosa, fasciculata and reticularis. ठीक है. Question number 2. The outermost layer of adrenal cortex is Glomerulosa. glomerulosa. Perfect. Question number 3. The main hormone secreted by the zona glomerulosa is बताइए. Aldosterone. Aldosterone. Perfect. Question number 4. The primary hormone secreted by zona fasciculata is fasciculata कौन सा हार्मोन बनाती है? Answer is Cortisol. cortisol. Perfect. Zona reticularis primarily produces Androgens. weak and yes. The adrenal cortex hormones are synthesized from what? Basis क्या है इनका? Excuse me, किसका mic on रह गया भाई? Cholesterol. Cholesterol. Perfect. It is cholesterol. Okay. Yes. Question number 6 तक हो गया. Which of the following is not a function of adrenal cortex hormones? बताइए. Question number 7 का आंसर guys. Question number 7. Which of the following is not a function of adrenal cortex hormones? Muscle contraction. Yes, it is muscle contraction क्योंकि बाकी सारे काम तो ये लोग कर ही रहे हैं. Aldosterone acts on what? Kidneys. Kidneys. Perfect. ACTH is secreted by pituitary. Yes, and that too which pituitary? Anterior pituitary. Anterior pituitary. Perfect. Okay. Question number 10. The half-life of cortisol in plasma is approximately. Question number 10 का आंसर. It is sorry इसमें आंसर थोड़ा गड़बड़ दिया है इन्होंने. It should be 1.5 to 2 hours. ठीक है, इसको मैं भी ठीक कर देती हूँ. 1.5 हम लोगों ने पढ़ा भी था. 2 hours. ठीक है. ठीक है जी. तो आंसर इज C. The 1.5 to 2 hours. ठीक. Okay. The question number 11. The main function of glucocorticoids is to Promote glucose utilization. promote glucose. No. Increase Gluconeogenesis. Exactly. ठीक है. Question number 10. Cortisol levels are highest at which time of day? in the morning. Early in the morning. Good. So these were the questions that I had brought for you guys. आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. I'm open for questions. पूछना है किसी को कुछ? No questions at all? समझ में आया सबको सब कुछ? कोर्स समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से?
कोई बात नहीं, आज कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट वीक्स doubt session also. And if you guys don't have any more questions, then we can conclude the session. You can leave the meeting and then we'll conclude the session. Good night, everyone. Thank you, ma'am. You're welcome. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome.